Good morning, everyone. How are you? I'm your English teacher, Mr. Ravi. Today we will read the chapter Glimpses of India. So, guys, let's get started with the first part. A baker from Goa. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the bottles, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pattern in Goa. अब देखो जो ये है ये गोवा के जो बेकर्स हैं, ठीक है, और ये क्या थे, ये पुर्तगाली थे, ठीक है। अब क्या है कि जो खाने वाले जो ये क्या बनाते थे, डबल रोटी। तो डबल रोटी खा इसमें क्या कहा गया, ऑथर ने ये कहा कि चाहे डबल रोटी खाने वाले गायब हो गए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बनाने वाले गायब नहीं हुए हैं। आज भी और जो अंगीठियाँ हैं, जो भट्टियाँ हैं, वो बंद नहीं हुई है, ठीक है। आज भी वो जो डबल रोटी बनाने वाले वो आज भी जीवित है, चाहे फादर ना हो, ठीक है, लेकिन उसका बेटा जो फैमिली का जो प्रोफेशन है वो आगे बढ़ा रहा है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his sailing around, and then again when he returned after emptying his huge bucket. The jingle third of his bamboo woke up us from sleep, and we ran to meet and greet him. So why was it so? Was it for the love of the love? Not at all. The loaves were made the loaves were brought by some paskin or best time, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब क्या था कि अब जो ऑथर अपने बचपन की बातें बताता है कि कैसे वो जो बेकर हैं, जैसे कि कोई जो डबल रोटी बेचने वाला है वो आता था और उनको वो जगा देता था, ठीक है, और वो भागते भागते उसके पास जाते थे, ठीक है। And the baker made his musical entry on the scene with the jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head, and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning, and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. And then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? And who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अब बताता है कि कैसे जो बेकर आता था तो उसके हाथ में एक लाठी होती थी, ठीक है, और लाठी को जब वो मारता था ऐसे मतलब धरती में इसको मारता था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, और सिर पर उसकी टोकरी होती थी जिसमें डबल रोटी होती थी, और वो डबल रोटी को रख देता था किसी के सामने, किसी मतलब ग्राहक के सामने, और किसी के घर के, और जब कोई आता था तो उसको वो गुड मॉर्निंग बोलता था और फिर डबल रोटी उसको बेचता था। और ये जो बचपन में क्या करते थे, जैसे बच्चे होते हैं ना कि आसपास इकट्ठे हो जाते हैं चीज़ बेचने वाले के, तो बच्चे से इकट्ठे, तो ऑथर भी अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हो जाता था, और फिर वो जो लॉस वाला है, जो डबल रोटी वाला, वो उसको हल्के से डांट कर भगा देता था। और वो जो ये ब्रश भी नहीं करते थे उस वक्त, वो कहते थे कि शेरों के जो दांत है
कौन साफ करता है? शेर कभी दांत साफ नहीं करते, वो ये कहता है। ठीक है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. So, just as a party or feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals too. So, the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolihans are must for Christmas as well as other festivals. So, thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब क्या होता था कि जो बेकर्स होते थे ना, वो एक खाने की चीज़ बना देते थे जिसका नाम बोलता, जिसके बिना ना जैसे कोई भी त्यौहार है तो वो फीका ही रहता था, उसके बिना वो पूरा नहीं माना जाता था, और शादी विवाह में भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single-piece long frock reaching down to knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers, which were shorter than full-length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pants which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pedder. देखो जो ये बेकर होते थे ना, तो इनकी एक खास ड्रेस होती थी. ठीक है. जो ऊपर वाला जो स्कर्ट होती थी उनकी वो घुटने तक आती थी, और जो भी व्यक्ति कोई भी ऐसी मतलब उनकी जैसे कोई ड्रेस पहन लेता था तो उसको ऐसा कमेंट मिलता था कि भाई उसको पैडर, और उनको पैडर बोलते हैं. ठीक है. तो उनको कमेंट मिलता था कि पैडर है, तुम तो भाई पैडर हो. ठीक है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, and monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in all days. The baker and his family never starved. His family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. So even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब उस वक्त क्या होता था कि जो ये बेकर होते थे ना, तो ये मतलब इनसे कोई भी मतलब ये गरीबी में नहीं रहते थे, क्योंकि ये अच्छे पैसे कमाते थे, तो उनका जो शरीर था वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था. ठीक है. तो कोई भी भूख से नहीं मरता था इनमें से. तो क्लास यहाँ पर हमारा जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हो गया. तो नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.